Back to all of you. I am your host Zaurul Hassan, as usual, with some good information. So I would like to share you some good information regarding the test of the SS and the lectureship. The first question is: applied linguistic is a or an blank term, umbrella term. Linguistic is a concern with the nature of language and communication. Linguistic deals with the study of a particular language. The branch of linguistics cover wide range of the study is applied linguistic. यहाँ पर B option right होगा. Who is among the father of the modern linguistic? Noam Chomsky. Who is the father of linguistic? De Saussure. The father of semantic is Alfred Habdank. Who is the father of English morphology? August Sachslicher. Who is the father of English language? Chaucer. Syntax is a Greek word. Father of phonetics, Daniel Jones. Speech pathology is the study of the functional and structural change in speech. Nash is teaching in the main concern of the applied linguistic language. Dialectology is associated with the dialects and the variation. Historical linguistic is called diachronic linguistic. Option B होगा. Morphology is the study of the words. Morpheme is a meaningful nice unit of a language. Morphological. Nice is the study of the internal structure of the word and change in the form of words. Morphology. Nice are the smallest independent meaningful unit of a language. Morpheme. Paralinguistic is the study of dash clues, non-verbal clue. Paralinguistic is a dash property, non-phonetic property. Proxemic is the study of space in communication. Kinesis is the movement of a body, gestures, and regarded as dash communication, non-verbal communication. Haptics means anything relating to the sense of touch. Dash is a science technology transmitting and understanding through the touch. We have got proxemics. Dash deals with the structure, historical development, literary study, the linguistic of a language, philosophy. Dash is the smallest unit of speech, phoneme. तो कितने phoneme हैं इंग्लिश में? 44. Sorry. Distinct speech sound is called phone. तो मैंने यहाँ पर distinct speech sound is called phone. तो मैंने यहाँ पर बोल्ड नहीं किया, ये फ़ोन है. Dash phonetics study how the speech sound are produced by vocal cord of a human being articulatory. तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि phonetics के जो हैं वो 3 काइंड है: articulatory, auditory and acoustic. Acoustic phonetics is the study of dash made by the human being vocal apparatus for communication, sound waves. Auditory phonetics deal with how sound are perceived, auditory nerves. Dash is the arrangement of the word to create well-formed sentence. Syntax. The word morphology actually is taken from which subject? Biology. Phonology is the classification of dash with the system of particular language, sounds. Semantic is the study of words and sentences. Kind of morpheme in which the word class change, derivational morpheme. Derivational morpheme में क्या होता है? वर्ड की क्लास चेंज हो जाती है, नाउन वर्ब हो जाता है या वर्ब नाउन हो जाता है या नाउन से हम एडजेक्टिव बना लेते हैं, तो ऐसी मॉर्फीम डेरिवेशनल मॉर्फीम कहलाएगी. Phonology converts unit of a sound into spoken language. Kind of morpheme in which class of the word doesn't change but only meaning or a function of the word change. Inflectional morpheme.
इन्फेक्शनल मॉर्फीम में क्या होता है, वर्ड की क्लास चेंज नहीं होती मगर फंक्शन चेंज हो जाता है। सिंगुलर से हम प्लूरल वर्ब भी बनाएंगे और प्लूरल वर्ब से हम सिंगुलर वर्ब भी बना सकते हैं। तो इस तरह उसकी फंक्शन जो है चेंज हो जाएगा, मगर क्लास चेंज नहीं होगी। जैसे फर्स्ट फॉर्म से हम सेकंड फॉर्म बनाए या थर्ड फॉर्म बनाए वगैरह वगैरह। बाउंड मॉर्फीम फर्दर डिवाइडेड इनटू inflectional morpheme and derivational morpheme. The study of language is written by George Yule. Which of the following morpheme stands its own meaning? ये फ्री मॉर्फीम है। फ्री मॉर्फीम अपनी माना खुद दिखाता है और इसे किसी और वर्ड या मॉर्फीम की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब वर्ड की, सॉरी वर्ड नहीं, सब वर्ड की। राइज इन द फॉल ऑफ द वॉइस इन स्पीकिंग इज इंटोनेशन। ये राइज एंड फॉल क्या होता है, जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं टू टाइप के, एक होता है हमारा क्वेश्चन इंटरोगेटिव और दूसरा होता है पॉजिटिव। इंटरोगेटिव जो WH क्वेश्चन से हम करते हैं तो पहले राइज आता है बाद में फॉल आता है, और डिस्क्रिप्टिव में हम जब पहले आता है फॉल और बाद में आता है राइज। जैसे मिसाल के तौर पर व्हाट आर यू डूइंग, तो व्हाट पर ज़्यादा स्ट्रेस आया और डूइंग पे कम। तो इसी तरह है आई एम राइटिंग, तो राइटिंग पे ज़्यादा स्ट्रेस आया। Dash the loudest syllable of a word, stress. The part of word is known as syllable. An introduction to study of the speech is associated with, तो यहाँ पर ये जो है एडवर्ड सेपियर का लिखा हुआ बुक है, An Introduction to the Study of Speech, एडवर्ड सेपर। Around dash languages currently spoken in the world 6,500. A dash language is a grammatically simplified communication method. Pidgin. Pidgin में क्या होता है, दो ऐसे ग्रुप होते हैं जिनमें दोनों की जो है लैंग्वेज कॉमन नहीं होती, तो हम उसे पिडजिन कहते हैं। और पिडजिन जब जो है वो का एक ज़बान जो है उसमें मिक्सअप हो जाए, मतलब कि कोड स्विचिंग हो जाए, तो वो क्रेओल कहलाती है। Dash is a language that comes from the simplified version of another language or the mix of the two or more languages called Creole. Dash is the common language serving as the regular means of the communication relating to the scientific, technological and academic information between different linguistic groups in multilingual speech community is lingua and franca. Which of the following is schwa sound? इसे a sound कहते हैं, ये schwa sound है। Who explain the relationship of a language with thoughts? ये सैपियर और वोल्फ थे जो लिंग्विस्ट थे, इन्होंने लैंग्वेज और थॉट की रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया। कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज इज प्रपोज बाय ये खैचरू। ये कैचरू एक जर्मन लिंग्विस्ट था जिसने ग्लोबल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट पेश किया। लेमा क्या होता है? लेमा फिनेटिक्स में एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द वर्ड कंटेनिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, ये फोनेटिक में आता है। अ रेटोरिकल फिगर ऑफ अ रिपीटेशन विच द सेम वर्ड द फ्रेजेस इज रिपीटेड बाय द बिगिनिंग ऑफ इन द बिगिनिंग ऑफ द सक्सेसफुल लाइन क्लॉज और सेंटेंस इज नोन एनाफ्रा। एनाफ्रा में क्या होता है? हर क्लास या सेंटेंस की लाइन में पहला वर्ड जो है वो सेम ही रिपीट होता है। काइंड ऑफ वर्ड विच हैज़ नो एलोमाफ, उसे ज़ीरो एलोमाफ कहते हैं। ये एलोमाफ के जो भी टाइप हैं इस पर मैंने एक वीडियो बना दी है और इसमें मौजूद है मेरे चैनल पे, आप ज़रूर देखिएगा। तो एलोमाफ क्या होता है कि शीप और शीप, तो शीप का प्लूरल शीप ही होगा, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। तो ऐसी जो है वर्ड को हम ज़ीरो एलोमाफ कहेंगे। डेल हेमेस वाज अ लिंग्विस्ट। द सीक्वेंस ऑफ फोनेटिक लॉ की सीक्वेंस क्या है? वर्नर, क्रिम और ग्रासमिंग, इन्होंने सीक्वेंस पेश की थी फोनेटिक्स की, लॉ की। लैंग्वेज इन स्टीफन पिंकर, ये स्टीफन पिंकर एक लिंग्विस्ट था जिसने ये बुक लिखी है, इसका नाम है लैंग्वेज इंस्टिंक्ट। द ट्रम इन टी फेडा मीन्स अपराइजिंग।
ये एक्चुअली अरबिक टर्म है जिसकी मीनिंग है अपराइजिंग, ऊपर जाने वाला. Phonology, morphology and syntax are the level of linguistic. Are registered in linguistic in a way people use different word, spelling or the grammar, talk or write differently to the different people in the different situation. तो register क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा समझा लूँ कि register ऐसा होता है कि जैसे मिसाल के तौर पर एक लायर है वो अपनी लैंग्वेज यूज़ करता है, इसी तरह एक टीचर है वो अपनी लैंग्वेज यूज़ करता है वर्ड की, इसी तरह डॉक्टर है, डॉक्टर अपनी लैंग्वेज यूज़ करता है. तो ये लैंग्वेज जब डिवाइड हो जाती है स्पेलिंग में, वर्ड में और ग्रामर में डिफरेंटली, तो उसे हम रजिस्टर कहते हैं इन वर्ड्स को. हु इज़ क्रेडिटेड विथ द डिस्टिंक्शन ऑफ लोकेशनरी, इल लोकेशनरी और प्री लोकेशनरी स्पीच. ये A.L. ऑस्टिन ने इसमें जो है डिस्टिंक्शन दी थी स्पीच की. डिस्टिंक्शन का मतलब है अलग अलग. Which function, the function which describe language as a form of language, pragmatic. Most basic building blocks of a language is phoneme. Which of the following is a common term for the early middle age? ये है antediluvian या dark age. मिडिल एज को डार्क एज भी बोलेंगे, एंटीडिलुवियन कहेंगे. इसी तरह फोनीम का मैं आपको बताता चलूँगा. फोनीम साउंड जो को कहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ट्रम है वॉश, तो वॉश में यहाँ पर 3 फोनीम है. एक हो गया W, दूसरा A और तीसरा SH जो श का साउंड देता है. द ऑथर ऑफ हर्ट ऑफ डार्कनेस, ये जोसेफ कॉनरेड का लिखा हुआ है. Linguistic term that deals with how situational context influence the production of meaning, pragmatic. Astrophel is an elegy written by the Spencer on the death of Sidney, who got the title of national poet. National poet का title किससे मिला? शेक्सपियर को. Where is the Canterbury Tale was the final destination for the pilgrimage, the shrine of Thomas the Cat, the father of prose, Francis Bacon. The school of a thought which primarily focus on the grammatical side of a language, functionalist. Heart of darkness open in what setting? ये एक्चुअली जो पोइम है उसकी सेटिंग हुई थी अ बोट ऑन अ थेम्स रिवर. थेम्स रिवर जो है लंदन की मशहूर एक रिवर है. Which Bronte wrote Wuthering Heights, one of the most famous novel in the history of English literature. इसे Emily Bronte ने लिखा था. Who introduced dramatic monologue. ड्रामेटिक मोनोलॉग सबसे पहले जो है किसने लिटरेचर में इंट्रोड्यूस करवाया? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने. लैंग्वेज इज अ सोर्स ऑफ डेवलपिंग थीम. दिस फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज इज रेफर टू रैशनल फंक्शन. The refer to talking about the language itself, its a function, word definitions, clarifying ambiguity and the describing deliberate words play. इसे हम कहेंगे metalingual function. The function is used to solve the problem is heuristic function. Shakespeare wrote his famous work, what sort of word? He is used in what sort of word? So ये in मैंने नहीं लिखा, किस मतलब वर्स में, शॉर्ट के वर्स में लिखा है. सारा इसने तकरीबन जो है काम वो आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा है. वर्ड्स वॉज द ग्रेटेस्ट ऑटोग्राफिकल एपिक इज द प्रील्यूड. Who speaks what language to whom and when? And this idea is given by Fishman 2003. A language which is used habitually by the people whose mother tongue are different is lingua franca. A variety of language used by the particular individual is dialect. जैसे मिसाल के तौर पर शेक्सपियर के स्ट्रीम यहाँ पर है. एमिनेंट टेक्निक used by the Virginia Woolf into the lighthouse is stream of unconsciousness. The author of To a Skylark is a P.B. Shelley. Northumbrian, Mercian, Kentish and West Saxons were the 4 dialects of the old period. ये old period में 4 किस्म के डायलॉग बोले जाते थे.
Iliad is written by Homer. The term widely used by the social linguistic refer to a community based on a language is speech community. Play on words is known as the pun. पन क्या होता है? जो जब हम सेम साउंड और डिफरेंट मीनिंग वाले वर्ड्स यूज़ करते हैं सेंटेंस में तो उसे पन कहलाते हैं. Study of a society in a relation to language is socio-linguistic or a sociology of a language. On death and women, wine and the scuff associated with Keats. ये Keats के जो है लिखे हुए वर्क हैं. Thomas Nash is an important figure of Elizabethan age. Harves, Occleve and Lydgate were imiters of Chaucer. ये तीनों जो है Chaucer. I am not sure about these. Moment of the Renaissance was started in Italy by Boccaccio. Middle Age in Europe was followed by the Elizabethan age, which literary aspects were the dominating in the middle period of the English. Impersonality or anonymity. Which is the representative poem of Old English period, Beowulf. What is the name of a pre-romantic age in poetry? Augustan age. ये pre-romantic age को हम Augustan age भी कहेंगे. The second half of this 18th century was the period of the sublime, typical of the new pre-romantic sensibility with the predilection for a night, darkness and the death, and this type of the literature was called Gothic. Classical age is also called age of reason and age of good sense. Classical age को हम age of reason और age of good sense भी कहेंगे. After Shakespeare, drama in England suffered decline. मतलब शेक्सपियर के बाद जो है ड्रामा ने बहुत सफ़र किया ड्रामा के. The soul was like a star and the dwelt apart. Wordsworth wrote for home, Milton's soul. Dramatic work written in the age of Shakespeare is the term as romantic drama. Second period of the Elizabethan drama was dominated by Shakespeare. The pilgrim are going to visit the tomb, Thomas A. Becket. How many tales are to be told by each pilgrim? 4. Chaucer was indebted to Boccaccio. Unfinished poem of a Chaucer is The House of Fame. The poem of Chaucer considered to be the first novel, the Book of Duchess. Chaucer wrote in which dialect? East Midlands. Lyrical ballads were written by Wordsworth and the Coleridge. Writing which include the manifesto of a romantic poetry lyrical ballad. T.S. Eliot and George Eliot were not related. सेमी टाइप के जो है नेम है, लोग समझेंगे कि हस्बैंड वाइफ थे या ब्रदर सिस्टर थे. ब्रदर सिस्टर नहीं थे, ये रिलेटेड नहीं थे एक दूसरे से. A Woman of No Importance is a comedy play by Oscar Wilde, who wrote the Song of Experience Black. William Black, one of the romantic poet. The Pilgrim's Progress was written by John Bunyan. Earliest play by the Shakespeare according to the Oxford Shakespeare 1888 is Titus Andronicus. Rainbow is a novel by D.H. Lawrence. The father of phonetics, Daniel Jones. Father of English language, Geoffrey Chaucer. The father of phonetics grammar, Lishan Tenier. The father of linguistic morphology, Augustin Sachelier. The father of modern linguistics, Noam Chomsky. The word semantic is a Greek word semen, which means mean. The father of pragmatism theories, Peirce.